ओके आवाज आ रहा है ना? आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Okay. So last class we are discussing about common neonatal problems. So we have completed up to this point. Yes. Why head is elongated? This is another question. Head is elongated. Yes. Elongated head can be seen in many conditions. Okay. Caput succedaneum is most common condition. And another one is cephalohematoma. Okay. These two are the most common conditions where head is elongated. Caput succedaneum will always, many times we have discussed, caput succedaneum is a boggy swelling, diffuse and edematous swelling, and it is only involves a scalp layer. There is no involvement of the bone and periosteum, and the swelling will not cross the suture line. Okay. And what is the most common cause of cephalohematoma? Sorry, caput succedaneum. That is delayed labor, prolonged labor. Because of prolonged labor, what happens? The skull of the baby is in close contact with the pelvic brim of the mother for a longer time. So because of this contact, continuous contact, and also pressure, so there will be some fluid changes. That means there is some fluid. That means fluid shifting will be there. Okay, because of compression, and that is the cause. जितना ज़्यादा देर तक ये रहेगा, उतना ज़्यादा देर तक ये इतना ही बड़ा कैपुट सक्सेसिनम बनेगा. Of course, this will cross the sutures. There is no limitation of the sutures. It disappears spontaneously. Okay, after the birth, what you have to do? Head support with the round pillow-like structure can be given. You have to give the head support by a round pillow-like structure. जो कभी कभी जो है वो सैंड से बनाते हैं या कोई ग्रेन से बनाते हैं, राउंड वाला जो ब्रिम जैसा, और उसमें जो है उसका हेड का रखो. ठीक है, सो दैट हेड पोर्शन कम इन बिटवीन, बीच में आ जाए. ठीक है, हेड का जो रिम पोर्शन है वो उस जो कपड़े वाला या जो ग्रेन वाला जो रिम है उसमें रहे. सो दिस पोजिशन हैज़ टू बी मेंटेन एंड नथिंग टू डू, इट विल बी गोइंग टू सबसाइड बाय itself. Okay, so pillow made out of sand or any other floor, soft floor can be also used. And if you want, mild patasveda can be given. Mild fermentation in the form of patasveda can be given. It is quite good. Okay, so no need of any application. This is a benign condition. It will disappear by itself. Okay, it is not a periosteal swelling. It is just a scalp layer swelling. Okay, scalp का जो 5 layers के याद करने के लिए, I think you know S C A L P, isn't it? S stand for skin, L stand for laminar layer, I think. A stand for adipose tissue layer. Then C for cutaneous layer, A for adipose tissue, L for laminar layer, then P for periosteal layer. Last bone आ गया वहाँ पे. ठीक है. So collection of the fluid is there in between these 4 scalp layers. And that is called as a caput succedaneum. Most common cause is prolonged labor. ठीक है. Next, cephalohematoma. Meantime, cephalohematoma, you also know that. What is cephalohematoma? Subperiosteal collection of the blood. ठीक है. The most commonly the causes are either injury, instrumentation, vacuum delivery, etc. And we know that it will not cross the suture line. It get resolved within few days or week usually. If the cephalohematoma is very small, then it will get resolved by itself within 1 hour or within a week, or may take some more days. But it is very dangerous if the cephalohematoma is infected. Okay, sometimes cephalohematoma means it's collection of the blood in the periosteal layer, and sometimes this collection of the blood, that is nothing but the hematoma. So that will undergo infection, and it may cause many problems. We have come across one case today in that OPD, second case that we have seen, isn't it? It is a complication of cephalohematoma leading to sepsis. Then the child is having so many problems, or no child is having almost cerebral palsy like symptoms. So it is infected. Therefore, inspection of the head is very important. Inspection of the head is very important because cephalohematoma sometimes may be small, maybe sometime bigger. If the bigger it is evident, small may not be evident sometime. Therefore, history of injury during the time of delivery, instrumentation, history of vacuum delivery, all these things are very important. Okay,
So now, jaundice is the most common complication of cephalohematoma if it's a bigger size, because when bleeding occurs, there will be hematoma formation. This hematoma is nothing but containing the blood. Blood contains RBC. RBC undergo destruction. RBC destruction leads to the formation of the jaundice. We know that excess RBC destruction. So कभी कभी हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो होता है बच्चों में, it may be the complication of cephalohematoma also. In the last class also we have not mentioned this. Cephalohematoma may also lead to increased bilirubinemia. This is one of the causes. Provided cephalohematoma should be bigger size. Okay. Now, so only part is this part has to be seen. Otherwise, it is also not much problematic. वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इन्फेक्टेड. अगर इन्फेक्टेड हो गया या बड़ा साइज है तो क्या है कि उसको एस्पिरेशन करके निकालना पड़ेगा या छोटा सा इंसिशन करके उसको निकालना पड़ेगा. पेरियोस्टल स्वेलिंग है, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके. अदरवाइज आयुर्वेद एक्सप्लेन्स अबाउट उपशीर्षका. उपशीर्षका, ठीक है. सो उपशीर्षक में उसने निरुजा शोतः ऐसा कुछ बताया है, ठीक है. तो दोनों में जो है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया उसने. सो ये सेफेलोहेमेटोमा और कैपुट सक्सीडम दोनों को जो है आप उपशीर्षक में ले सकते हैं, ठीक है. बट चरका से एनी स्वेलिंग विच इज प्रेजेंट इन द हेड एरिया इज कॉल्ड एज शोथ चिकित्सा अध्याय में बताया. कोई भी जो स्वेलिंग है जो हेड एरिया में है, स्काल्प एरिया में है, दैट इज कॉल्ड एज उपशीर्षक है. दैट इज अकॉर्डिंग टू चरका. चलो, बट वाकबट एंड अदर्स डिफर. नाउ दिस इज वन मोर कंडीशन. मदर डॉक्टर डैंड्रफ आ गया इतना जल्दी मेरा बच्चे को, ठीक है. इट्स नॉट एक्चुअली डैंड्रफ, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज क्रेडल cap. Okay, this is nothing but this is cradle cap. So cradle cap is quite common in children, rather newborn. Okay, so what are the causes why this क्या है कि पूरा स्किन जो है वो स्काल्प जो है हेड्स के ऊपर एक वाइट कलर का कैप जैसा मिलेगा, इसलिए उसको कैप बोलते हैं, क्रेडल कैप, ठीक है. क्रेडल के ऊपर वो एक कैप जैसा मिलेगा वाइट कलर का, क्योंकि क्रस्टिंग की वजह से. तो देयर विल बी क्रस्टिंग ओवर द स्काल्प एंड दैट लीड्स टू दिस पर्टिकुलर appearance, hence the name cradle cap. It may lead to seborrheic dermatitis. One of the complications is it may lead to seborrheic dermatitis. Okay, so why this happens? The most common cause is actually we are not cleaning the head portion of the baby properly. That's the one thing. After उसको नहलाने के बाद या कुछ भी ठीक है करने के बाद आप स्काल्प पोर्शन को ठीक से ड्राई नहीं कर रहे हो, that's one cause. Second time, when you are giving feeding and all, many times the feed also enter into the head area and it is not cleared, ठीक है. Third one is excess formations of sweat and all in the head area, that is not clear. So all these things leads to actually nothing but blockage of the sweat glands or hair follicles. इसकी वजह से क्या है कि जो hair follicles है वो ब्लॉक हो जाएगा और sweat glands वाला जो ये है वो भी ब्लॉक हो जाएगा. तो क्या होगा वहाँ पे sweat gland और ये जो hair follicles ये सब जब ब्लॉक हो जाएगा, सो मॉइस्टनेस उसका मेंटेन नहीं होगा, वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा. जब मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा तो वहाँ का जो लोकल जो स्काल्प का स्किन है वो ड्राई होगा. ड्राई होने के बाद वो एज ए क्रस्ट जो है वो निकलेगा, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. इसी का नेक्स्ट स्टेज है सेबोरिक डर्मेटाइटिस. सेबोरिक डर्मेटाइटिस पहले क्रेडल कैप होगा. क्रेडल कैप इफ इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज देन इट मे लीड टू सेबोरिक डर्मेटाइटिस. देन इट मे स्टार्ट स्प्रेडिंग बैक, नेक एक्सेट्रा, हर जगह में स्प्रेड होना शुरू हो सकता है. सो देयरफॉर वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज मुंडन संस्कार. यू हैव टू गो फॉर मुंडन संस्कार एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है. क्योंकि इफ यू गो फॉर मुंडन संस्कार इट इज क्वाइट ईजी टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ द स्काल्प एरिया एंड इट ऑल्सो गिव्स द स्टिमुलेशन फॉर द हेयर ग्रोथ एंड ऑल्सो इट रिमूव्स द ब्लॉकेज इफ इट ऑल इज प्रेजेंट, ठीक है. तो देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. Then one more important condition is asymmetric head size. Asymmetric head size, that is also one of the most common problem. Many times वो मदर आती है कि मेरा बच्चे का साइज राइट साइड में ज़्यादा है, लेफ्ट साइड ज़्यादा इलोंगेटेड है, एबनॉर्मल हेड साइज, ठीक है. सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द इन यूट्रो पोजिशन. बच्चे का जो हेड साइज है इट डिपेंड्स अपॉन द इन यूट्रो पोजिशन. कभी कभी इन यूट्रो पोजिशन में कौन सा पोजिशन में रहता है और जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, सो depending upon that sometimes head size may be there at the time of the birth, abnormal हो सकता है. But usually after birth you can maintain the head size by keeping a proper pillow. The pillow should be like that कि जैसा मैंने बताया कि round shape, so that the occiput of the scalp will come in between and the side portion will be there in the fitting on the rims.
ठीक है। तो कभी कभी एक ही पोजीशन में राइट लैटरल लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बच्चे को हमेशा सुलाने से क्या होगा कि उस साइड थोड़ा प्रेस हो जाएगा, बिकॉज न्यूबॉर्न स्कल इज वेरी वेरी सॉफ्ट। ठीक है, वो पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस रहता है, तो एक ही साइड प्रेशर लगने से दिन में 10 घंटा जो है वो एक ही पोजीशन में ऐसा सोता है। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर लग सकता है, तो हेड का जो शेप है वो एबनॉर्मल हो सकता है। सो दिस इज हाउ दिस यूजुअली happens. Okay, so another, this is one cause. Then occiput and parietal bones are flat and proper positioning with a soft pillows is very important. ठीक है, prominent part of the head should touch as the floor. ठीक है, यही मैंने बताया, occipital prominence जो prominent part है, so वो जो है फ्लोर को टच करना चाहिए, बाकी सब उसका साइड में रहना चाहिए। and this leads to gradual round shape of the skull. This is how to manage asymmetric head shape is because of improper positioning. ठीक है, may be in utero or maybe after birth. Or sometimes congenital anomalies of the head may lead to some of the asymmetric size. That's a different issue. Okay. Another condition is craniotapes. What do you mean by craniotapes? Craniotapes means it is nothing but softening of the skull bone. Softening of the skull bone is called as craniotapes. Okay. So this can be pressed like a tennis ball. जैसा tennis ball को press करते हैं उतना अंदर चला जाएगा, उंगली दबेगा वहाँ पे। ठीक है, एंड यू शुड नॉट बी प्रेस द फ्यूचर लाइन। टेस्ट करने के लिए भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी फ्यूचर लाइन में जो है आपको इसको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर लाइन में वाइडली ओपन रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ओपन मैंने प्रेस नहीं करना चाहिए। क्रेनियोटोप इज प्रेजेंट, सपोज क्रेनियोटेप्स है, तो इट मे बी सजेस्ट यू सम ऑफ द बोन डिसऑर्डर्स एंड रिकेटिक लाइक अर्ली रिकेटिक लाइक कंडीशंस। नो नीड ऑफ एनी कैल्शियम प्रिपरेशन बिफोर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से पहले कोई भी कैल्शियम प्रिपरेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो क्रेनियोटोप इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। समटाइम कैल्शियम डेफिशिएंसी और व्हाट इज ऑस्टियोपिनिया ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज में ज़्यादा होता है, सो दैट मे ऑल्सो लीड्स टू क्रेनियोटेप्स। नाउ वन मोर कॉमन कंडीशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड नेसोलैक्रिमल डक्ट। कंप्लेंट ऑफ द मदर इज बच्चे का आंख से कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, एक साइड से या दोनों साइड से। ओके, परसिस्टेंट वेटनेस एंड वाटरिंग फ्रॉम द आई, दैट इज एपिफोरा, बट देयर इज नो कंजेशन नहीं है, या बाकी जो है रेडिशनेस नहीं है कि हेमरेजेस कंजेंक्टिवल हेमरेज ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल वाटरिंग आ रहा है वहाँ पे कंटिन्यूसली, एंड दिस विल बॉदर द मदर टू मोर एक्सटेंट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द नेसोलैक्रिमल डक्ट। नेसोलैक्रिमल डक्ट जो है वो पूरा पेटेंट नहीं है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। नेसोलैक्रिमल डक्ट बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है लैक्रिमल सेक्रेशन जो है इट इज़ नॉट एबल टू प्रॉपरली एबल टू ड्रेन आउट, एंड दैट लीड्स टू द बैक प्रेशर एंड थ्रू द conjunctival punctum which is present in the ear, the lateral cathars of the ear, so what that is tears will come back. Okay, this is a cause. So what is the treatment? Lacrimal area should be massaged from upward to downward direction. Lacrimal area ऊपर से लेकर के नीचे तक upward to downward direction में उसको मसाज करना चाहिए by using any soft oil, non-irritative oil, maybe coconut oil. Okay, upward to downward direction with the inward pressure over the lacrimal sac. जब अपवर्ड से डाउनवर्ड सब करते रहेंगे, थोड़ा बहुत इनवर्ड प्रेशर देना है। इनवर्ड प्रेशर हैज टू बी गिवन बाय द थंब से जो है आप हल्का सा इनवर्ड प्रेशर देना है, और ऊपर से नीचे तक उसको मसाज करना है। अबाउट 15 to 20 टाइम्स पर डे यू हैव टू डू व्हेनेवर द चाइल्ड इज प्लेइंग। जब भी चाइल्ड सो रहा है या जब भी बच्चा प्ले करता है, खेलता है, उस टाइम में जो है खेल में जो है आपको इसको करना है। ठीक है, देन दिस कैन बी ऑल्सो फॉलोड बाई माइल्ड पटास्वेदा या हस्तास्वेदा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। हल्का सा ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो जाएगा, श्रोतोशोधन हो जाएगा। 3 to 4 months if it is not opened, suppose 3 से 4 महीने के बाद भी this problem is persistent, then probing should be done to remove whatever the obstruction which is there. Okay, so Kukunakala conditions which is explained in our sense may be compared to this particular condition to some extent, not completely, to some extent it can be compared. Another common problem is umbilical granuloma. Umbilical granuloma is another small flesh-like pale nodule at the base of the umbilicus with a persistent discharge. So cauterization by the silver nitrate and common salt can be done. देखे होंगे बहुत सारे cases हमारे पास आते हैं. We just go for the common salt application. It will act like a क्षार and it will do the work. Okay. So now होता क्या है कि umbilical granuloma is because of not properly cleaning the umbilical stump and also because of some repeated infections. ठीक है,
दो कॉज है, रिपीटेड इन्फेक्शन वहाँ पे होता रहा, सो देन इट इज प्रॉपर, द स्टम्प इज नॉट प्रॉपरली हील्ड, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड गिरने के बाद देयर विल बी ए स्मॉल अल्सर विच इज फॉर्म्ड, दैट अल्सर हैज टू बी completely healed. And if there is repeated infection or hygiene is not maintained or some irritating substance are there, ठीक है, so then what happens, this ulcer will not be completely healed and there is a repeated infection that leads to formation of the granulomatous tissues and that is called as umbilical granuloma. ठीक है, तो granuloma always, the granulomatous means granuloma is always tend to have the bleeding, तो वहाँ से ज़्यादा bleeding आएगा, so mother will have the complaints of umbilical bleeding also sometime, repeated infection, और थोड़ा सा नोडल भी मिलेगा वहाँ पे, एक नोड जैसा अपीयरेंस आ जाएगा. ओके, सो दिस हैज टू बी सिंपली ट्रीटेड बाय क्षारा, ठीक है, कॉमन सॉल्ट एप्लीकेशन, और स्फटिक भी डाल सकते हो आप, सो दैट कैन बी अप्लाइड. अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा विच इज मोस्ट कॉमनली seen. Then another is sore buttock and napkin rash. Napkin rash and the sore buttock, that is also very common. This is very common when the mother uses what you say, when the mother uses the nylon and watertight plastic napkins. This is quite common. Okay, the use of nylon and watertight plastic napkins may lead to sore buttock and napkin rash, therefore it should be avoided. And if there is delay in changing the napkins, पेशाब या whatever यूरिन या stool pass करने के बाद, for a long time you are not changing the napkins, then it is containing actually what we know that the stool and urine, they contain acidic substances, ammonia है, urea है, uric acid है, so that can do the cause the irritation to the newborn soft buttocks, delicate soft buttocks, and that may lead to this problem. Okay, and first there will be a redness, then will be irritation, then will be itching, then is formation of ulcer, and then it become mahavyadi. Okay, anamaka, what do you say, anamaka, mahagoram. ठीक है, so then so bottom should be cleaned gently with a wet cotton and that area should be always kept dry and it is exposed to air. जितना आप उसको पैक करके रखेंगे उतना वो हील नहीं होगा, उसको ओपन करके रखना पड़ेगा, उस एरिया को हमेशा ड्राई करना पड़ेगा. समटाइम द क्लॉथ विच वी यूज टू क्लीन द एनल एरिया मे ऑल्सो कॉज द इरिटेशन. ठीक है, आप कॉटन यूज ही कर रहे हो बट उसको बार बार जब करेंगे तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे इरिटेशन बढ़ सकता है. देयरफॉर इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज वेट नैपकिन. ओके, दैट इज बेस्ट. अगेन if there is say irritation, redness, etc. कुछ है तो application of soothing ointment and coconut oil can be done. Okay, any other thick oil application like एस्टिमोदो तैला और पुन्ना का तैला can be tried. और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो then we can try with the what you say some of the pitahara drugs can be given. That's a different issue, उसको हम discussion नहीं करेंगे यहाँ पे. Another common condition is toxic erythema. Okay, toxic erythema. So this is most common in 3 to 4 days of the life. What is the basic nature of toxic erythema? Central paleness and peripheral redness. Centrally वो pale दिखेगा, peripherally red होता जाएगा. That is called as erythematous rash with a central pallor. Okay. Second day or third day of the life it will usually start. Usually it starts from the face area and then spread to the trunk and extremities. पहले face में आएगा, उसके बाद trunk और extremity में आएगा. Disappear spontaneously by 3 to 4 days. Cause is at not known. Contemporary science says still जो toxic erythema का जो cause है वो अभी पता नहीं है. They attribute some of the allergic causes for that. कुछ एलर्जी जो है इसके लिए कारण है बोल के. And usually family history किसी का है एलर्जी का, या बच्चे में इंडिविजुअली जो है कपड़े का एलर्जी हो रहा है, नया कपड़ा है, कोई केमिकल का एलर्जी हो रहा है, या समटाइम इवन दी एयर, जो बच्चों को जो है बाहर का एनवायरमेंटल का जो एयर से जो स्किन को जब लगता है, सो देयर इज इरिटेशन एंड दैट इज कॉजिंग लाइक दैट. मेनी थिंग्स आर एक्सप्लेन. ओके, नाइलॉन क्लोथिंग यूजुअली कॉजेस दिस, और वुलन क्लोथिंग, नाइलॉन क्लोथिंग. ठीक है, अभी जो है हम फर वाला जो यूज़ करते हैं जो विंटर सीजन में, तो दिस आर ऑल वेरी कॉमनली कॉजिंग दिस प्रॉब्लम. सो नाइलॉन क्लोथिंग, डर्टी क्लोथ्स, दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज. सो नथिंग टू डू, दिस इज अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन. वी नो दैट. अबाउट द न्यू क्लोथ बिफोर वॉशिंग, दैट मीन्स वॉश करके न्यू क्लोथ को आप यूज़ करो. कॉटन वेयरिंग शुड बी ऑलवेज डन, नो अदर नाइलॉन क्लोथ्स एंड ऑल. एंड बाकी जो है इट विल सेल्फ लिमिटिंग, नथिंग टू डू मच, नो नीड टू मच interference. Now this is one condition, shall I feed my baby? What are the absolute contraindications of feeding?
ठीक है। कभी कभी मदर को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, मैं मदर को कुछ उसको प्रॉब्लम है, मैं फीड कर सकता हूँ क्या, मुझे बुखार आ गया मैं फीड कर सकता हूँ क्या, मुझे पेट में दर्द है मैं फीड कर सकता हूँ क्या, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं मदर को। सो कन्फ्यूजन है। व्हाट आर द एब्सोल्यूट, देयर आर सम एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द फीडिंग, देयर आर सम रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द फीडिंग, ठीक है। सो वी शुड हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस एंड हैव टू गिव द वेरी clear answer which is non confusing to the mother, so that she can, because breast milk should not be avoided to the baby, okay. There are some absolute contraindication: active tuberculosis, use of some of the malignant drugs, etc. There are some relative contraindications, torch infection, ये वो सब है, ठीक है. We will not go in detail of that. One more condition is peeling of the skin. कभी कभी स्किन का जो पीलिंग होता है, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट टर्म एंड ऑल्सो समटाइम इन सम ऑफ द टर्म बेबीज, ओके. सो पोस्ट टर्म में दिस इज क्वाइट कॉमन. समटाइम पीलिंग विल बी देयर बिकॉज ऑफ लेस एमनियोटिक फ्लूइड, ड्राई होता है बच्चे, है ना, कि जो कि पोस्ट टर्म होते होते एमनियोटिक, वी नो दैट एमनियोटिक फ्लूइड धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है. सो जितना पोस्ट टर्म रहेगा तो वहाँ पे उसको एमनियोटिक फ्लूइड कम मिलेगा, तो उसका स्किन एक्सपोजर हो गया, स्किन ड्राई होगा, एंड ड्राई स्किन में लीड्स टू पीलिंग. Okay, simple application of ST Madhutala is sufficient. Now we have got some other common findings like subconjunctival hemorrhage. This is also a physiological condition. Then cutis marmorata. This is also a physiological condition. Mongolian blue spot, which occurs in the back and the trunk, back and as well as buttock area, etc. Mongolian blue spot. Okay, so this is also a normal thing. Bluish spots. This is also normal thing, nothing to worry. Epstein pearls जो पैलेट वाला एरिया में होता है, पैलेट वाला एरिया में एप्स्टिन लाइक पल्स थोड़ा ब्लूइश कलर का मिलता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. एंड सकिंग कैलोसिटीज, लिप का बीच में जो है थोड़ा बहुत डार्क और थिक हो जाता है बीच में, इन द मिडल पोर्शन ऑफ द लिप बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सकिंग. ओके, सकिंग कैलोसिटीज दे आर ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल. एंड कॉन्जेनिटल टीथ और नेटल टीथ, contemporary sciences it is also normal, but according to Ayurveda it is not about danta sampat, तो दंत संपत में नहीं आता है, so that is not good. Okay, so tongue tie, sometime you will get tongue tie, that is also normal to some extent, ठीक है. and कुछ बच्चों में मिलता है. non retractable prepuce of the penis, that is also normal, ठीक है. so you should not try forcefully, sometime वो अपने आप हो जाता है, नहीं तो बाद में हम circumcision वगैरह करेंगे. Congenital hydrocele, even congenital hydrocele is also quite common to some extent, okay. Then hymen tax in the female baby, hymenal tax will be there, that is also quite normal, there is nothing to worry. Sacral dimple, अब पीछे से देखेंगे तो sacral dimple रहेगा, वो भी normal है, ठीक है. So we should know that. Only thing is sacral dimple has to be examined for पाइलोनोडल साइनस, उसमें कभी कभी साइनस हो सकता है, ठीक है. पाइलोनोडल साइनस हैज टू बी सीन, दैट वाज सीन. प्रोमिनेंट ज़िपिस्टर्नल, कभी कभी बच्चे का ज़िपिस्टर्नल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल. बोलेक्स, शुरू में जो है बोलेक्स भी कॉमन है. अम्बिलिकल हर्निया टू सम एक्सटेंट इट इज ऑल्सो नॉर्मल. हार्लेक्विन कलर चेंजेस, हार्लेक्विन कलर चेंजेस मीन्स सम सडन कलर चेंजेस विच ऑकर्स in the body, that is because of some reflex vascular phenomena. Cause क्या है पता नहीं, कुछ reflex vascular phenomena होता है इसकी वजह से. Subcutaneous hemorrhage, that is also common. Milia means nasal area में, face area में सब थोड़ा बहुत एक white जो कमोडोस आता है ना, जैसा पिंपल्स वगैरह आता है, उसका जो sebaceous secretion ऊपर आता है, white दिखता है, so that is called milia is also common. Acne neonatal, कुछ पिंपल जैसा acne neonatal, that is also common in the newborn. Stroke bites like condition is also normal. Okay, these are some of the common physiological conditions, okay, which looks like pathological to the mother and the parents, but a doctor, neonatologist should know that this is normal, then you can treat the conditions very confidently. Okay, so with this we have completed examination of the newborn. Two parts we have seen, one is the general common examination of the newborn, and second one is a detailed examination. Third one we have seen that in terms of different common physiological problems which occurs in the newborn. Okay, so with this we complete the
examination of the newborn. Thank you very much.